हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ओनली द रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज लास्ट चैप्टर ऑफ 12th। आज जो चैप्टर चलेगा वो लास्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये जो पोर्शन में आज आपको लेने वाला हूं वो पूरा का पूरा रिवीजन है ऑफ द 11th। पूरा बेस है, क्योंकि विदाउट बेस अगर प्रोबेबिलिटी चालू कर दिया तो समझो काफी लोगों को परेशानी होगी। એટલે એ લેક્ચર નો રિવિઝન માટે હું 11th નો આખો પોર્શન તમને રિવાઇઝ કરું છું। सो टुडेज लेक्चर इज रिवीजन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। पर ये याद रखना कि ये आपका ही पोर्शन है, इस तरह से मत सोचना कि ये रिवीजन है तो चलो जाने दो, लाइट मत लेना इससे, राइट। चलो, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी आर वेरी इक्विवेलेंट वर्ड्स। संभावना, द इंग्लिश गुजरातीओ प्रोबेबिलिटी संभावना અને પોસિબિલિટી નું છે શક્યતા। તો સંભાવના અને શક્યતા આ બંને બહુ સિમિલર વર્ડ છે। देयर इज वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन देम। બહુ જ પાતળો ડિફરન્સ છે એમની વચ્ચે। શક્યતા અને સંભાવના, પોસિબિલિટી વી આર મેઝરિંગ इन परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी इन रियल नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहली डेफिनेशन है दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। डेफिनेशंस में लिखने वाला नहीं हूं, सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा और थोड़ा फास्ट हम यहां से निकल जाएंगे क्योंकि हमें हमारे पोर्शन में भी जाना है, राइट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसमें व्हाट विल बी द रिजल्ट वो हम आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही कह सके। प्रयोग કર્યા પછી જ આપણે નક્કી કરી શકીએ કે એનું પરિણામ શું આવશે। બિફોર ધ એક્સપેરિમેન્ટ વી કેન એઝ્યુમ, આપણે ધારણા કરી શકીએ છે, બટ વ્હાટ વિલ બી ધ રિઝલ્ટ that we can say after the result, right। suppose if I toss a coin, जो હું एक सिक्को उछालूं तो वहां पे मुझे हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है, but what will be the final result that we can say after the result, after the experiment, right। so this kind of experiment is called the random experiment। जैसे आपके केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स है, ऑल आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? सेकंड थिंग कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो आपको पहले से पता है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, सो विच आर पॉसिबल आउटकम्स, एना शक्य परिणामों कया? सो आइदर एच और टी, वो हमें पहले से पता है, बट विच विल बी द फाइनल रिजल्ट दैट वी कैन से आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। इन द सेम वे केमिस्ट्री के लिए कि भी आपके सिलेबस में जितने भी टाइट्रेशन है वो सारे आपके पास लिस्ट में होते हैं। उसी में से आपको दिया हुआ कोई भी टाइट्रेशन होगा ये आपको पता होता है। तमने आपेलो पदार्थ ए एमाथी लिस्ट माथी जैसे। सो विच इज द फाइनल आंसर, वो तो आप एक्सपेरिमेंट वन बाय वन करते जाओगे। सो इन द एंड आप कंक्लूजन पे आओगे, देन यू कैन से द गिवन टाइट्रेशन इज दिस। आपेलो पदार्थ छे, राइट। सो इट इज लाइक दैट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसके पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से पता हो, बट विच विल बी द फाइनल आंसर दैट वी कैन से आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। કયું પરિણામ આવશે, શક્ય પરિણામોમાંથી કયું પરિણામ આવશે એ તો પ્રયોગ કર્યા પછી જ ખબર પડી શકે। એવા પ્રયોગને યાદચ્છિક પ્રયોગ કહીશું, ઇઝ કોલ્ડ ધ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ। ક્લિયર પોઈન્ટ। सेकेंड डेफिनेशन, सैंपल स्पेस और निदर्शावकाश। याद रखो, सेट ऑफ all possible outcomes of random experiment is called sample space। यादृच्छिक प्रयोगના તમામ શક્ય પરિણામોનો ગણ એટલે નિદર્શાવકાશ કહેવાય। जैसे कि मैंने सैंपल स्पेस लिखा फॉर टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो उसके जो आउटकम्स होंगे वो या तो एच रहेगा या टी रहेगा। तो इससे जो सेट बनेगा दैट सेट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन।
આ જે નિદર્શાવકાશ બનશે એ સિક્કો ઉછાળવાના પ્રયોગનો નિદર્શાવકાશ બનશે. If we threw a die, જો એક પાસો ફેંકવામાં આવે તો એના પોસિબલ આઉટકમ્સ થશે 1 2 3 4 5 6. So this set is called sample space for throwing a die. एक समतोल पासो उछाળતા મળતો નિદર્શાવકાશ. This sample space is called the set for the throwing a die. Clear point? So this is called sample space. Or second thing, if elements of sample space are countable, means finite, then the sample space is called the finite space sample space. और अगर उसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है तो वो जो सैंपल स्पेस होगा that will be infinite sample space. Infinite sample space and finite sample space हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ finite sample space है. જે નિદર્શાવકાશના ઘટકો ગણી શકાતા હોય તેને શાંત નિદર્શાવકાશ કહીશું અને ગણી ન શકાતા હોય તેને અનંત નિદર્શાવકાશ કહીશું. આપણા કોર્સમાં માત્ર અને માત્ર શાંત નિદર્શાવકાશ છે, અનંત નિદર્શાવકાશ નથી. So these are the illustration for the finite sample space. આ શાંત નિદર્શાવકાશના જ ઉદાહરણો છે, યાદ રાખજો. An event એટલે કે ઘટના. બહુ જ સરસ ડેફિનેશન છે, ધ્યાન રાખજો. Any subset of sample space is called an event. નિદર્શાવકાશના કોઈ પણ ઉપગણને घटना कहे छे. अच्छा, मैं ये सैंपल स्पेस लेके आपको समझाऊंगा कि भी किस तरह से इवेंट को हम डिफाइन करेंगे. तो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर थ्रोइंग अ डाई. अब उसके मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, देखना. इसके सबसेट्स नल सेट, देन सिंगलटन सेट्स, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, set of 3, set of 4, set of 5, set of 6. अब दो एलिमेंट्स वाले रहेंगे. You know how many subsets will be there? 2 raised to 6 because it has 6 elements. So 2 raised to 6 means 64. अब दो एलिमेंट्स वाले आएंगे like 1 2, 1 3, dash dash dash, फिर 3 एलिमेंट्स, फिर 4 एलिमेंट्स. ऐसे करते करते हमें U पूरा का पूरा मिलेगा विद 6 एलिमेंट्स. सो ये आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 64 सबसेट्स है यहाँ पे. सो द डेफिनेशन ऑफ इवेंट इज, घटनाની વ્યાખ્યા આવી છે, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट. નિદર્શાવકાશના કોઈ પણ ઉપગણને આપણે ઘટના કહી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ એન ઇવેન્ટ. આ એક ઘટના છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇવેન્ટ. આ પણ એક ઘટના છે. ये भी इवेंट है, આ પણ ઘટના છે. ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है. ऑल आर इवेंट्स. सबके अलग अलग नाम है. सो द डेफिनेशन ऑफ इवेंट, ઘટનાની વ્યાખ્યા આવી છે, નિદર્શાવકાશના કોઈ પણ ઉપગણને ઘટના કહે છે. Any subset of any subset of sample space is an event. Any subset of sample space is called an event. Right? Now some different events. Impossible events. Now some types of the events. હવે ઘટનાઓના કેટલાક પ્રકાર છે. એમાં પહેલી છે impossible event, અશક્ય ઘટના. The subset phi of sample space is called the impossible event. નિદર્શાવકાશના ઉપગણ ખાલી ગણને
इम्पॉसिबल इवेंट कहे छे। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि ऐसी इवेंट के जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आफ्टर थ्रोइंग अ डाई द आउटकम इज 7 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, देखो जैसे मैं डाई थ्रू करूंगा, समझ लो कि मुझे 1 2 3 4 5 6 तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट इफ आई से आफ्टर throwing a die the result is 7 is called impossible event। આવી ઘટનાને આપણે અશક્ય ઘટના કહીશું કે ભાઈ એક પાસો ઉછાળું છું અને મને પરિણામ 7 મળે, so it is not possible, therefore it is called impossible event, and null set is the symbol for the impossible event। Sure event, the subset U of sample space is called sure or certain event। નિદર્શાવકાશના ઉપગણ U ને એટલે એને પોતાને જ નિદર્શાવકાશના ઉપગણ U ને ચોક્કસ ઘટના કહે છે। The subset U of this sample space is called sure or certain event, and U is the notation for the sure event। Simple or elementary event, प्राथमिक अथवा मूलभूत घटनाओं, यहीं पे इसीलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया था। देखो नल सेट को हमने बोला इम्पॉसिबल इवेंट, यू को हमने बोला श्योर और सर्टेन इवेंट। व्हाट अबाउट द अदर सबसेट्स? तो अब इसकी बात चल रही है, देखो ये इसकी बात चलेगी। ऑल द सबसेट्स हैव वन एलिमेंट ओनली, दे आर सिंगलटन सबसेट्स। तो यहां पे डेफिनेशन क्या होगी कि द सिंगलटन सबसेट्स ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड सिंपल इवेंट्स, और प्राथमिक अथवा मूलभूत घटनाओं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक घटकीय उपगण ने આપણે प्राथमिक अथवा मूलभूत घटना कहीશું। से आइदर प्राथमिक और मूलभूत दोनों साथ में नहीं बोलना है। The singleton subsets are called the simple events or the elementary events। बराबर याद रखना, सिंगलटन सबसेट्स आर कॉल्ड सिंपल और एलिमेंटरी इवेंट्स। एक घटकीय उपगणों ने प्राथमिक अथवा मूलभूत घटना कहे छे। कंपाउंड इवेंट और संयुक्त घटना, कंपाउंड इवेंट्स और संयुक्त घटना। देखो नल सेट के लिए बात हो गई इम्पॉसिबल इवेंट, यू के लिए बात हो गई श्योर और सर्टेन इवेंट, सिंगलटन सबसेट्स के लिए बात हो गई सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स, प्राथमिक अथवा मूलभूत घटनाओं। अब जो रेस्ट एलिमेंट्स बचे हमारे पास वो यहां पे आएंगे। द सबसेट्स ऑफ यू विच हैज मोर देन वन एलिमेंट्स is called the subset of U which has more than one elements is called compound event अथवा संयुक्त घटना। U નો એવો ઉપગણ કે જેમાં એક થી વધારે ઘટક હોય, U નો એવો ઉપગણ એટલા બધા 2 એલિમેન્ટ્સ વાળા, 3 એલિમેન્ટ્સ, 4 એલિમેન્ટ્સ, 5 એલિમેન્ટ્સ, 6 ને લઈએ કારણ કે 6 ને આપણે સર્ટેન ઇવેન્ટ એટલે કે ચોક્કસ ઘટના કીધી છે। so the subset of U which has more than one element is called compound event। જે ઉપગણમાં નિદર્શાવકાશના જે ઉપગણમાં એક થી વધારે ઘટકો હોય તેવી ઘટનાને સંયુક્ત ઘટના કહે છે। તેવી ઘટનાને સંયુક્ત ઘટના એટલે કે compound event કહે છે। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट એટલે કે પૂરક ઘટના। say set of all the elements which are in U but not in A, A માં ન હોય અને U માં હોય તેવા તમામ સભ્યોથી બનતા ગણને
એની પૂરક ઘટના કહે છે set of all the elements which are not in A but in U is called complementary event of A. The notation is A dash or A bar or AC complementation of A. अच्छा, उसका सेट फॉर्म होगा set of X belongs to U such that X does not belongs to A में ना हो पर U में हो, ऐसे एलिमेंट से जो इवेंट बनेगी that event is called the complementary event. એવી ઘટનાઓને આપણે પૂરક ઘટનાઓ કહીશું કે જેનાથી બનતો ગણ છે U માં હોય પણ A માં ના હોય, બરાબર છે. so this is called complementary event, એટલે કે પૂરક ઘટના. ये आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी. The events A और B, घटनाओं A अथवा B, इसका ओल्ड नेम है यूनियन इवेंट्स, એટલે કે योग घटना. ओल्ड बुक में, शायद गुजरात बोर्ड की बुक में आपको ये मिलेगा. सो आपको A और B, A अथवा B से भी याद रखना है क्योंकि बुक में हमारे ये वर्ड्स यूज किए हुए हैं. और रेफरेंस बुक में आपको यूनियन इवेंट्स और योग घटना એવું જોવા મળશે. મેં તમને 11th માં એવું કીધેલું છે કે यूनियन मींस और मींस एडिशन. फिर से याद रखना, योग એટલે अथवा, अथवा એટલે સરવાળો. यूनियन मींस और मींस एडिशन. योग એટલે अथवा, अथवा એટલે સરવાળો. So the definition will be like this: set of all the elements which are in A or in B. એવા ઘટકોથી બનતો ગણ કે જે A માં હોય અથવા B માં હોય તેને A અને B ની योग ઘટના કહે છે. This is called union event of A and B. The notation is A union B. In set form it is written as X belongs to U such that X belongs to A or X belongs to B. X belongs to A or X belongs to B. So you can say union event. તમે योग घटना પણ કહી શકો છો. ઇવેન્ટ A or B, A अथवा B પણ કહી શકો છો. ક્લિયર પોઈન્ટ. The event A and B, ઘટના A અને B. In another way we can say intersection event और छेद घटना. इंटरसेक्शन इवेंट और छेद घटना. भाई आपको ये भी मैंने 11th में बताया था कि इंटरसेक्शन मींस एंड मींस मल्टीप्लिकेशन. छेद એટલે અને એટલે ગુણાકાર. ફરીથી છેદ એટલે અને એટલે ગુણાકાર. intersection means and means multiplication. So in set form it is known as set of all the points which are in A and in B is called intersection event. A માં હોય અને B માં હોય તેવા ઘટકોથી બનતા ગણને A અને B ની છેદ ઘટના કહે છે. In notation form it is denoted by A intersection B, and in set form it is written as X belongs to U such that X belongs to A and X belongs to B. X belongs to A and X belongs to B. So it is also known as intersection event, એટલે કે છેદ ઘટના. તમે આને છેદ ઘટના પણ કહી શકો છો. કેન સે intersection event, या तो फिर according to our book you can say the events A and B, છેદ A અને B એમ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. The event A but not B, घटना A पण B नहीं. इसका मतलब ये होता है कि A is occurring but not B. B अकर नहीं होगी और A अकर होगी.
ए उद्भव से पण बी नहीं उद्भवे, ए उद्भव से पण बी नहीं उद्भवे. It means that set of all the elements which are in A but not in B, એવા ઘટકોનો ગણ કે જે A માં હોય પણ B માં ના હોય, A માં હોય પણ B માં ના હોય, એને તમે આમ પણ લખી શકો છો A minus B. આ ગણમાં જે પણ ઘટકો આવશે એ બધા A માં હશે પણ B ના તો બધા મેં બાદ કરી દીધા છે. Means we are subtracting B. So set of all the elements of A which are not in B, A માં છે પણ B માં નથી. आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B डैश A में है और B में नहीं है. A उद्भवे छे અને B નથી ઉદ્ભવતી. A is occurring but B is not occurring and B is not occurring. That's why it is called the event A but not B. Mutually exclusive events, परस्पर निवारक घटनाओं. See, if A intersection B is null set, then A and B are called mutually exclusive events. તેમને પરસ્પર નિવારક ઘટનાઓ કહે છે. If intersection event is impossible event, જો છેદ ઘટના અશક્ય ઘટના હોય या छेद गण खाली गण હોય, if intersection is null set, then A and B are called totally mutually exclusive events. બંને પરસ્પર નિવારક એકબીજાથી ભિન્ન ઘટનાઓ છે. In the set form we are saying they are disjoint sets. આપણે તેમને અલગ ગણો પણ કહીએ છીએ ગણની દુનિયામાં. But in the language of the probability we will say mutually exclusive events अथवा परस्पर निवारक घटनाओं. exhaustive events और निशेष घटनाओं. exhaustive events और निशेष घटनाओं. If A union B is U, then A and B are called exhaustive events. जो A योग B बराबर U, तो A અને B ने निशेष घटनाओं कहे छे. When we take the union and if it is the sample space, then the events are called exhaustive events. તેવી ઘટનાઓને આપણે નિશેષ કશું જ વધતું નથી. Everything will be in A union B. So this is called exhaustive events, मतलब निशेष घटनाओं. See, axiomatic approach to probability. संभावनानी पूर्वधारणा युक्त व्याख्या. एक्सियोमेटिक मतलब पूर्वधारणा, राइट. सो हमारे पास कुछ रिजल्ट है जो हम अभी डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे. 11th में मैंने आपको एक्सप्लेन तो किए ही थे, पर यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे. देयर आर 3 एक्सियोमेटिक, सॉरी हम उसे पोस्टुलेट भी बोल सकेंगे, राइट. एक्सियम्स भी बोल सकेंगे. We have 3 axioms, 3 postulates. First is for any event, कोई पण event A, कोई पण घटना A माटे, the probability of A is greater than or equal to 0. This is the notation for the probability. कोई पण घटना A माटे A ની સંભાવના હંમેશા 0 કે તેથી મોટી જ મળે. The probability of any event will be greater than or equal to 0. So probability cannot be the negative. સંભાવના ક્યારેય ઋણ ના હોય. The second axiom, that is P of U, probability of U means sample space. कुछ बुक में आपको P of S भी दिया होगा सैंपल स्पेस का, is always 1. Probability of U और probability of S, U means sample space એટલે કે નિદર્શ અવકાશ,
નિદર્શાવકાશની સંભાવના હંમેશા 1 થાય આ પણ આપણે સીધું સ્વીકારી લેવાનું છે ये रिजल्ट भी हम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे एंड द थर्ड एक्सियम त्रीजी पूर्वधारणा इफ A इंटरसेक्शन B इज नल सेट अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जो घटनाओं A અને B परस्पर निवारक होय तो if A and B are mutually exclusive events then probability of A union B is P of A plus P of B. Probability of A union B is P of A plus P of B. ये 3 एक्सियम्स, ये 3 पोस्टुलेट, आ 3 पूर्वधारणाओं તમારે યાદ રાખવાની છે કે every time the probability will be non negative, હંમેશા અનઋણ હશે. The probability of full sample space is 1 and when the events are mutually exclusive, so union events will be P of A plus P of B. Equiprobable events और समसंभावी घटनाओं, જે ઘટનાઓની સંભાવના સમાન હોય તેમને समसंभावी घटनाओं कहे छे. The events whose probability are equal called equiprobable events. जिस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल है वो सारी इवेंट्स आर नोन एज equiprobable events, are known as equiprobable events. Probability of elementary events, मूलभूत घटनाની संभावना. You can say simple event also. प्राथमिक अथवा मूलभूत घटना, જેને આપણે સાદી ઘટના અથવા प्राथमिक अथवा मूलभूत घटना પણ કહીએ છીએ. ચલો આપણી પાસે એક સેમ્પલ સ્પેસ છે, જોતા રહેજો. સપોઝ U is a sample space, એક શાંત નિદર્શાવકાશ છે, એના ઘટકોની સંખ્યા n છે, तो उससे n सिंपल इवेंट्स मिलेगी, n एलिमेंट्री इवेंट्स मिलेगी, क्योंकि सैंपल स्पेस को जितने एलिमेंट्स हो उतनी एलिमेंट्री इवेंट हमेशा मिलेगी. જેટલા શાંત નિદર્શાવકાશના ઘટકો હોય એટલી મૂળભૂત ઘટનાઓ મળે. तो यहाँ पे U को n एलिमेंट्री इवेंट्स मिलेगी અને n મૂળભૂત ઘટનાઓ મળશે. There are n simple events and remember it, always elementary events are equiprobable events. याद रखो हमेशा मूलभूत घटनाओं समसंभावी હોય છે, આ પણ આપણે સ્વીકારી લઈશું. तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि probability of x1 equal to probability of x2 equal to dash 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 till n equal to probability of xn is 1 by n. अगर u में n एलिमेंट्स है, so the probability of each elementary event will be 1 upon n. अगर 7 एलिमेंट्स वाला सैंपल स्पेस है तो हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/7. जो 6 घटकों वाળો નિદર્શાવકાશ હોય, so the probability for each element, દરેક ઘટકની દરેક મૂળભૂત ઘટનાની સંભાવના 1/6 થાય. લાઈક અહીંયા h અકર થાય એની સંભાવના 1/2, 40 it will be 1/2 because u has only 2 elements. चलो you have 6 elements, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. For all 6 elements the probability will be 1/6 1/6 1. Equiprobable events बनेगी. So ये भी याद रख लो कि always elementary events simple events are equiprobable events. मूलभूत घटनाओं हमेशा समसंभावी હોય છે. चलो प्रोबेबिलिटी
ऑफ इवेंट ए, घटना ए ની संभावना। भाई इतना कुछ देखने के बाद भी हमने एलिमेंटरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली पर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, अपन कोई घटना की संभावना जी मળી જ નથી। तो अब ये देखने जा रहे हैं कि भाई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी। सी सपोज U is a sample space containing n elements x1 x2 xr till xn, so number of elements for this sample space are n। આ નિદર્શાવકાશમાં ઘટકોની સંખ્યા n છે। let a be an event, ધારો કે a કોઈ ઘટના છે and r elements are the responsible for occurrence of event a, ઘટના a ના ઉદ્ભવ માટે r ઘટકો જવાબદાર છે। so it has x1 x2 up to xr, then probability of a means r by n। r means number of elements of event upon n means number of elements of sample space। we will say number of elements of event upon number of elements of sample space, number of elements of sample space। so this is the pure definition for the probability of any event। now we have some results, देखते जाओ। first that is P of A union B, probability of event for A or B, A ઉદ્ભવે અથવા B ઉદ્ભવે તેની સંભાવના। probability for event occurrence event A or B, A ઉદ્ભવે અથવા B ઉદ્ભવે તેની સંભાવના P of A plus P of B minus P of A intersection B। after that second one, probability for not A, अच्छा A अकर नहीं हो रही उसकी probability रहेगी P of A dash, that is 1 minus P of A, P of A dash that is 1 minus P of A। one more result remember it, one more result, third one, probability of impossible event is 0, probability for the certain event is 1, probability for the certain event means sample space is 1, but for probability for the null set or we can say impossible event, અશક્ય ઘટનાની સંભાવના 0 છે, ખાલી ગણ માટે સંભાવના આપણને 0 જ મળશે, બરાબર યાદ રાખજો। after that fourth one, if A is a subset of B, then P of B minus A equal to P of B minus P of A, P of B minus A equal to P of B minus P of A। also we can say and P of A is less than or equal to P of B, ये भी आपको याद रखना है। if A subset B then P of A
इज लेस देन और इक्वल टू P ऑफ B। ये रिजल्ट भी आपको बराबर याद रखना है। फिफ्थ रिजल्ट, P of A intersection B, probability of A intersection B dash, probability of A event A is occurring but B is not occurring, घटना A उद्भवे छे पण B નથી ઉદ્ભવતી તેની संभावना। तो आप ऐसे लिखोगे P of, जो डैश बिना का है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो इंटरसेक्शन, P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B डैश वगरनामाथी બંનેનો છેદ બાદ કરી દો। ऐसे हमें दो रिजल्ट्स मिलेंगे, लाइक A डैश इंटरसेक्शन B, B बट नॉट A, B उद्भवी रही छे पण A નથી ઉદ્ભવતી, सो P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। आप यहां से P of A डैश प्लस P of A इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो एक वन मोर रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, लास्ट रिजल्ट फॉर द रिवीजन 6th, P of A यूनियन B यूनियन C मीन्स A और B और C, A उद्भवे अथवा B उद्भवे अथवा C उद्भवे तेनी संभावना। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, इक्वल टू P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B इंटरसेक्शन C माइनस P of C इंटरसेक्शन A प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये सारी चीजें पूरी 11th की है, सब कुछ रिवीजन था, शांति से ये रिवाइज कर लेना। तो हमारे जो टॉपिक्स है उसमें आपको सब कुछ हेल्पफुल रहेगा। सो इट इज रिवीजन लेक्चर, रिवीजन करो। विल स्टार्ट लास्ट लेक्चर, देन वी विल ओके, सी यू, बाय बाय।